When we talk about present perfect, its definition is it indicates the action or activity which began and ended in past but effects are still in present. In other words, the work which has done recently. मीन्स कि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, ये इशारा करता है उस काम, उस सरगर्मी की तरफ जो कि माजी में शुरू भी हुआ और ख़त्म भी हुआ, लेकिन उसके असरात अभी तक हाल में हैं. दूसरे अल्फाज में वो काम जो कि अभी हो गया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है. आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क. उसने अभी तक अपना काम मुकम्मल नहीं किया है. ही हैज़न्ट कम्प्लीटेड हिज वर्क येट. माली ने पौधों को पानी दे दिया है. द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स. तुमने अभी तक नमाज क्यों अदा नहीं की है? वाई हैवेंट यू परफॉर्म्ड नमाज येट. It's all about present perfect. We use have or has or have not or has not with verb third form in present perfect tense. For I, you, we, they, we use have or have not with verb third form. For he, she, it, noun, we use has or has not with third form. For affirmative, we use subject plus have or has according to the subject plus verb third form plus object. For negative, we use subject plus has or have according to the subject plus not plus verb third form plus object. For interrogative means सवालिया के लिए we use have or has plus subject plus verb third form plus object plus question mark. For interrogative, we use have or has plus subject plus not plus verb third form plus object plus question mark. For detailed question or WH, we use WH plus have or has plus subject plus verb third form plus object plus question mark. For detailed question negative, we use WH plus have or has plus subject plus not plus verb third form plus object plus question mark. For instance, for affirmative, उसने झूठ बोला है. He has told a lie. For negative, उसने झूठ नहीं बोला है. He has not told a lie. For interrogative, क्या उसने झूठ बोला है? Has he told a lie? For interrogative, क्या उसने झूठ नहीं बोला है? Has he not told a lie? For WH, उसने झूठ क्यों बोला है? Why has he told a lie? मैंने नमाज अदा कर ली है. आई हैव परफॉर्म्ड नमाज. उसने नमाज अदा नहीं की है. ही हैज़न्ट परफॉर्म्ड नमाज. मैंने इम्तहान में अच्छे नंबर लिए हैं. आई हैव गॉट फ्लाइंग कलर्स इन एग्ज़ाम. उसने इम्तहान में अच्छे नंबर नहीं लिए हैं. शी हैज़ नॉट या ही हैज़ नॉट गॉट फ्लाइंग कलर्स इन एग्ज़ाम. रैयान ने सुफियान को धोखा दे दिया है. रैयान हैज़ डिसीव्ड सुफियान. रिज़ल्ट का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है. रिज़ल्ट हैज़ नॉट अनाउंस्ड येट. तुमने बदतमीज़ी की है. यू हैव मिसबिहेव्ड. मैंने आपको माफ़ कर दिया है. आई हैव फॉरगिवन यू. उसने गालम गलोच से बात की है. ही हैज़ टॉक्ड अब्यूजिव या शी हैज़ टॉक्ड अब्यूजिव. मैंने आपका पैगाम पहुंचा दिया है. आई हैव कन्वेड योर मैसेज.